Hey everyone, welcome back. And in this video, let's just go ahead and take a look at how you can make this promise work. Now, what all you can do with this promise. So first things first, I told you that fetch returns us a promise, gives us a promise. So let's actually see what this looks like. Alright guys, welcome back to another section which is gonna be on promises. Now in this section, we'll be discussing a lot of stuff about promises, ES6 promises, how they work, and promises are fundamental building blocks of JavaScript in the modern web. So it's absolutely critical that you do not skip this section. So we're going to be starting off this video with a little bit of revision and a little bit of setup as well simultaneously. So first of all, I'm on the CodeDump playground. If you do not know what this is, go to codedump.com, go to dashboard, go to your playgrounds, and then choose this HTML and CSS playground. And you should be here where I am so that we can play together. Well, you will also see interactive exercises along the way in the course on the timeline here on the right. So that's not a problem. But anyway, coming back to what promises are and how they work. Well, the first thing is in JavaScript and generally in programming, realize that there are some actions which are not instantaneous, right? For example, if you have created a variable a as 1 plus 1, we absolutely know that JavaScript, when it comes on this line, when it's computing this, it will evaluate it as soon as it can, right? And it will store the result back and you'll get 2 inside a. That's perfectly fine. Now, there are two more types of actions. The first one is something which you might want to deliberately delay, right? And you might also call them as functions. So you might see something like b is a function which returns 1 plus 1. So this expression is technically not evaluated unless this function gets called, right? So unless you're calling b like this, you're not actually evaluating this expression, right? There's this way. There's another way where you have no option but to wait for stuff, right? And the best example for this is network calls. For example, if you are waiting for another remote server to respond with you to something, and you can't really do anything. It's physics. You have to wait for that particular response to complete before you can process it. You cannot process it before it is completed. So JavaScript's promises come into picture during that part. So promise is just a promise, like it says, that it will try to get a future value, right? So what does that mean? It means that if you have a function, for example, get me a promise, right? And we're going to be discussing the syntax in a better way. So let's say you do a bunch of stuff here, which is immediately run, like, CPU stuff. And then you finally return something, right? So this something right here, let's say this is a promise. So what does this mean? This means that some time down the line, JavaScript promises you that it will try to, make sure you understand the statement, that JavaScript promises you that it will try to resolve this value, right?
it says that, hey, I do not know right now what this something is, because this something might be, let's say 100, right? So JavaScript says that, hey, I don't know what this something is, but I will try to resolve this ASAP. And once I do, I'm going to get back to you, right? And I'm going to give you this value. So how do I know? Well, when this promise is resolved, well, if you have been working with JavaScript for a while, with callbacks, what we used to do is we would say something like, callback function, and then we'll specify a function which runs when a particular action completed, right? Or maybe something like, data 1, data 2, and then finally we have a callback, right? Which runs when this completed. With promises, the syntax is different. We're going to be coming to syntax, like I said, but just to give you a spoiler, the way it works is that you specify a dot then here, right? And we're going to be coming to the syntax in the next video. But I hope this sets up stuff right. One quick example of promise, which we can take a look at, is network request, like I said. So what we can do is very quickly in this video, just set up a single file. Let's say this is data.json, and we're going to be just specifying some data here, right? And you can also say hello world. It doesn't really matter. I just want a file we will be fetching over the network, right? So once you have this data.json file, if you open this in a new tab, you will also see that you can go to data.json and you will see this JSON file with you, right? So now what we want to do is we want to say that get me a promise should return a promise. So what we're going to be saying is return fetch HTTPS, not really HTTPS, we can just use the slash and we can say data.json, right? So fetch, I hope you know, is a browser-based API which allows you to make network requests. So we're going to be fetching data.json, and fetch returns us a promise. I know this for a fact because the API says that. You can also create your custom promises, which we'll be seeing very soon, but this is how you do it. So in the next video, we're going to be discussing a little bit more on the syntax of how this all works, and then making our progress to async await as well. So that is all for this one. I'm going to see you in the next video. Hey everyone, welcome back. And in this video, let's just go ahead and take a look at how you can make this promise work. Now, what all you can do with this promise. So first things first, I told you that fetch returns us a promise, gives us a promise. So let's actually see what this looks like. So I'm going to console log this thing, and I'm going to be opening our web page, going to inspect, and I'm in Safari, but I actually recommend you to have Chrome at this point. I have to be in Safari for some reason in this tutorial and in this a bunch of tutorials, but I would probably return back to Chrome ASAP. So anyway, once I refresh this, and I don't really like Safari DevTools that much, but once I refresh this, you can see that we have a promise console logged with a status of pending, right? So promise, now when I expanded it, it got status resolved because, well, you can think of the other value as cached. So the promise can be more or less in 3 states, right? We're going to be discussing that. The first state is pending. The second state is resolved. And the third state is rejected, right? So what does this mean? Well, by the name of it, pending means that it's still waiting for that particular resource to respond or that particular promise to evaluate. So it can be in pending for arbitrary amount of time, depending on how much time it takes. Resolved means that you actually got the value which you were expecting, that there was no error, there was nothing thrown at any point. And it's basically a developer construct that when do you want to actually say that the promise has resolved or not, and when you want to say the promise has rejected, because rejected usually implies that, hey, something went wrong, something failed. That is why we are just throwing this as rejected, so that you can maybe handle it as an error in your application. So once that is done, what you could see now is that when I fetch this data.json, we had a status of pending, and when I expanded this, we got status of resolved because it started as a pending promise. That means it was waiting for fetching this file.
And soon after that, it got into resolved status. That means it got the response, right? Now you could see that it has got a result property, which looks like what is our result, what will be our result, but you don't need to actually, access it like fetch.result, not like that. It's not really your typical object, right? What you can do is like I said, you do a get me a promise dot then, and now you have the result with you, right? So this is a function which is passed to you. This is a function which is given to you, which is gonna call, which is gonna be called whenever this promise result. We discussed that this promise is gonna be something which is a promise made by JavaScript in the future, that whenever I get this value, I'm gonna resolve this, right? And the way you resolve it, the way JavaScript resolves it, is by specifying this dot then. So now if you console log this thing, result right here, and this could be anything, right? Because this is just a function name. Function parameter name, so it could be pretty much anything. So once you do that, and once I refresh this, now you're going to be seeing that we get the same thing, response, right? So let's play around this a little bit. What I'm going to do is I'm going to say const promise like this, and then I'm going to say promise.then, and it's the same thing, right? It's no different. So we can also do like console.log promise here if you want that, and it's the same thing. So if I refresh it now, you can see that we get a promise with status pending, and once it was resolved, we got a response, right? So there's that. And even if you try to cut this and paste this above, you're gonna realize that promise is actually asynchronous and actually is a part of microtask queue if you want to get into advanced side of things, which we'll not get, but you could see that we still got the same order of console logs. The first one was this one, and the second one was this one, right? Because it is resolved a little later down the line. So we have a basic understanding of what promise is. It's just a promise that in future JavaScript will return a value, and yeah, so let's just go ahead and try a different URL in the sense that something which is broken, right? So we're going to be doing something like this. I hope this domain does not exist. So if I go ahead and now refresh this, you're going to be seeing that we got something. We got a bunch of errors, but if you do not look at them at the moment, what you're going to be seeing is a promise with a status of rejected, and the result is type error, not allowed to request the resource. Well, this is because of access control checks and all that stuff, but you see that we got a third state of promise as well. So we saw the pending and the results. State, we also have seen the rejected state, right? Pending, resolved, and rejected. So the developers of this fetch API, what they decided in this case at least is, hey, that if we have, the access control checks failed, then we're going to be rejecting this promise. This was done by them, right? It could have been, technically, they could have just resolved this as well with the same result value. So like I said, when you will be creating your own promises, your own wrappers, you have to make that call when you want to reject a promise, when you want to resolve a promise, right? Whenever it's just a flag, it's just a symbol that will help you and the other developers who are using your code to manipulate the
the flow of control down the line, right? So yeah, that's pretty much
Hey everyone, welcome back. And let's just go ahead and take a look at how you can chain a sequence of promises and how that is even possible. So, first things first, what is possible in promises is that you can just keep on iterating and returning promises again and again from this dot then. So let me just go ahead and first of all get rid of this catch so that it's easier to look. So what happens is that you can technically go ahead and do this dot then sequence forever, right? Like forever. And why is that? This is a completely valid code in JavaScript. And you'll see that this console log will be executed. Surprisingly, right? If you did not know that. So if you go ahead and take a look inside the console, you will in fact, let's just go ahead and see. Well, it rejects the request, so that's why it does not happen. So let's just go ahead and bring it back to data.json. So now once we do that and refresh, you're going to be seeing that we get will be executed eventually, right? Why is that? Well, let's talk a little bit about this dot then. It's not your old school JavaScript function. So what's happening here is that once you got a promise, you have the ability to add a dot then here, which will run in case it is successful, right? But you can go ahead and return something, anything from this promise, from this dot then call, and that could act as the next thing which will be resolved in that particular. But you can go ahead and return something, anything from this promise, from this dot then call, and that could act as the next thing which will be resolved in that particular promise. Now, let me just go ahead and explain what I just said. So, number one is that you have a static value, right? There are three. There are basically three options. It is a actual value, right? Number one. Number two, it is a promise. And number three, you don't return anything. You don't return anything. Number three is actually technically number one itself, because in JavaScript, if you don't return anything from function, it implicitly returns undefined. So if you have not written this line, it's actually this state right now is similar to this state right now. So you're technically just returning undefined all the way, right? If you have not written returns here. But again, these are the three possible states. In case of number one or number two, both of these cases, what you can do is you can chain another then and listen to what value you are getting, right? It is not actually very useful in case of actual value, but it is super useful if you want to have another promise being returned. And let me just go ahead and show you an
example for that real quick. So if you console log data, you're going to be seeing that we have got something with this response thing, right? But I cannot really see what the response was, which is this data with us, right? So how do we get this? Well, the fetch API, again, the fetch API actually returns you the data in the following way. So you as an end user, you as a developer can go ahead and say that my JSON data is actually equal to, let's say, data.json, right? All right, so let's just go ahead and take a look at this, what this gives us. And you're going to see that once you refresh, you're going to be getting another promise, right? Although it's resolved and all that stuff, but you have a promise right here. So you cannot technically go ahead and do data.json hello, for example, because data.json is not an object. It is a promise right now. Well, it is technically an object, but you get the idea. It's not your object which you want. So you can see if you just do .hello, you're going to get undefined because it's a promise. It's not resolved yet, right? Maybe it's resolved, maybe it's not. Who knows? So what you can do is you can do a similar approach which you have done so far. So data.json and .then, and then you say, data2, for example, or whatever you want. And then you can say console.log finally, and then you can go ahead and say data2, right? So let's see. Let's get rid of this because, yeah. Let's just go ahead and now take a look at this, refresh, and now you're going to see that we actually get this finally, and then we have a nice object with some data here and hello world and all that good stuff. So now you can go It's ahead and now say literally very data2.hello frustrating, and man. What get. the fuck he's even talking? I can't even understand even a single line. It's like he's talking to himself. Either he himself he himself doesn't know this concept with clarity because he's saying something weirdly, something like he's saying like you might be, you also hearing this, right? He's saying dot json dot Arey bro, dot json dot this is means all, I don't know what he's even talking. Like I didn't even understood a single word what he is speaking. What the I, like he, such a worst teacher he is, man, such a worst teacher he is. Dot then I'm stuck, man. I don't know what to do now. It's literally frustrating, yaar. I don't know. I want to give up now, yaar. I don't know, yaar, what to do. I know all this, and all this. Although I will watch this, but I don't know what is this generator function. I don't know this. It's so frustrating, yaar. Like that's why I don't feel like studying. See, it's already 1 hour now, but I haven't finished this thing. It's so frustrating, yaar. Async await. I don't know. Let's just watch this matter how hard you try. video again. It's so fucking frustrating, man. I just don't feel like studying, yaar. If I don't know how much more money I'll have to put in to complete this. Like already I have wasted 12,000 in and bought this shittiest course ever
from Codem, and now I'm kind of stuck, man. It's so confusing. Sync await API calls. I don't know, yeah. I don't know. but you cannot get things done, then listen to me. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज, जिसके अंदर आज वाले चैप्टर में हम एसिंक्रोनस चीज़ों को देखने वाले हैं। यानी हम बात करेंगे कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, कॉल बैक हेल्प वाली प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, असिंक अवेट क्या होते हैं। ये वैसे तो सुनने में हमें बहुत डिफिकल्ट टर्म्स लग रहे होंगे, जिनको शायद हम फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर सीख रहे होंगे और इन्हें शायद हम एडवांस पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड इनको आज के चैप्टर में हम कंप्लीटली कवर करेंगे। अब इसके अलावा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और टॉपिक भी सीखना है तो इसी साथ अब इस चैप्टर के अंदर जिन कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे होंगे, बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, उनको सीखने के बाद, उस तरीके से कोड करने के बाद हम इन जनरल कह सकते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है और हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी आती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम एक्जैक्टली पढ़ने के वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होती है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, हो सकता है ये शब्द में पहली बार सुनी हो, उसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होंगे जिनके मतलब धीरे धीरे हम समझ जाएंगे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें कंक्लूजन निकालेंगे कि इन जनरल जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम एसिंक्रोनस चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहां जनरली हम असिंक अवेट को यूज करते हैं, बिकॉज दे आर जनरली बेटर देन प्रॉमिस चेन्स एंड प्रॉमिस चेन्स आर जनरली बेटर देन कॉल बैक हेल्प। बेसिकली इस कंक्लूजन पे थोड़ा सा हम आने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी धीरे धीरे। अब ये तीनों ही जो टर्म्स हैं ये कंप्लीटली नहीं है हमारे, हमने आज तक नहीं सुना प्रॉमिस चेन्स क्या होती है, असिंक अवेट क्या होता है, कॉल बैक हेल्प क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो हम शुरुआत करेंगे कॉल बैक्स के साथ, फिर जानेंगे कॉल बैक हेल्प क्या होता है, फिर जानेंगे कैसे इनको फाइट करने के लिए प्रॉमिस आए, और फिर प्रॉमिस चेन्स क्या होती है, फिर जानेंगे कैसे उससे भी एक बेटर तरीका हमारे पास असिंक अवेट होता है। तो धीरे धीरे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनानी जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि सिंक क्या होता है, यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अगर आपने एक सीक्वेंस में, यानी आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिख दिया, हमने सेकंड लाइन ऑफ कोड लिख दिया, हमने थर्ड लाइन ऑफ कोड लिख दिया, तो जिस सीक्वेंस में हमने कोड लिखा है उसी सीक्वेंस में हमारा कोड का एग्जीक्यूशन होगा। सो सिंक्रोनस मींस द कोड रन्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रोग्राम, ईच इंस्ट्रक्शन वेट्स फॉर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। यानी एक हम सिंपल सा कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर हमने अपने जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक index.html बनाई है जिसके अंदर से बॉयलरप्लेट कोड है, उसे हमने स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है, और app.js अभी हमारे पास कंप्लीटली खाली है। अब app.js के अंदर सिंपल सा हमें कोड लिखेंगे console.log1, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी कोड की। उसके बाद सेकंड लाइन लिखेंगे console.log2, उसके बाद अपनी थर्ड लाइन लिखेंगे console.log3। ये हमने तीन लाइन ऑफ कोड लिख दी, इसको सेव कर लिया एंड यहाँ पर आ जाएंगे, हमने अपनी index.html को खोला हुआ है और हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया हुआ है, इंस्पेक्ट के बाद हम कंसोल विंडो पर है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारे पास प्रिंट हो गया 1 2 3। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, जिस ऑर्डर में, यानी पहले अगर हमने 1 प्रिंट करवाया तो 1 ही प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट करवाया तो 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट करवाया तो 3 प्रिंट हुआ। और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन यानी एक काम करने को बोला जा रहा है, यहाँ पे दूसरा काम करने को बोला जा रहा है, यहाँ पे तीसरा काम करने को बोला जा रहा है। दूसरा काम क्या करेगा, पहले वेट करेगा कि पहले वाला काम जब कंप्लीट होगा, यानी पहले 1 प्रिंट होना चाहिए तभी 2 आकर प्रिंट होगा, पहले 2 प्रिंट होना चाहिए तभी 3 आकर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम करती है, यानी सिंक में चल रही है सारी चीजें। अब अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहे जो हमने अपने मिनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, चाहे हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी, यानी जिस सीक्वेंस में हमने इंस्ट्रक्शंस को लिखा है उसी सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहती है कि कभी-कभार अगर हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं ना, यानी कभी-कभार अगर हमने सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन लिख दी तो कभी-कभार हो सकता है बीच वाली कोई इंस्ट्रक्शन हो जो ज्यादा टाइम ले रही हो काम कंप्लीट करने में। अब console.log तो बस प्रिंट करवाना होता है कंसोल विंडो पर, वो तो बहुत जल्दी इंस्टेंटेनियस काम हो जाता है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ सेकंड ले सकते हैं, तो वो टाइम ले सकते हैं कंप्लीट होने में। तो ऐसे में अगली वाली इंस्ट्रक्शंस को वेट क्यों करना पड़े उनके लिए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, और इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में इतने अच्छे से इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। एपीआई क्या होती है, एपीआई को हम एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, वैसे तो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली एपीआई को मान लो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिस पर हम कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट के बदले वो हमें कुछ डेटा रिटर्न करके दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेदर एपीआई हमारे पास होती है, तो उसमें आप रिक्वेस्ट भेजो कि मुझे दिल्ली का वेदर चाहिए, तो वो क्या करेगा, दिल्ली के वेदर का डेटा हमें रिटर्न कर देगा। या फिर काफी सारी फाइनेंस से रिलेटेड एपीआई होती है कि मुझे चाहिए कि आज गोल्ड का प्राइस या फिर आज हमारे निफ्टी 50 का प्राइस क्या चल रहा है, तो एपीआई क्या करेगी, एपीआई हमें वो डेटा रिटर्न करके दे देगी। एक बार हमारे पास वो डेटा आ गया फिर हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। तो काफी सारी जो जनरल वेबसाइट्स होती है जो हमें फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है कि इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पर चल रहा है, ये इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, तो जनरली वो बैकएंड के अंदर किसी ना किसी एपीआई को यूज कर रहे होते हैं टू फेच दैट डेटा। कुछ होती है जो अपना बिल्ड करती है, कुछ होती है जो थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करती है। तो यहाँ पर कभी-कभार हो सकता है हमने कोड लिखा, कुछ प्रिंट करवाया, फिर हमें क्या चाहिए, हमें एपीआई से डेटा चाहिए। अब एपीआई से डेटा फेच करने में हो सकता है एपीआई को, क्योंकि हमने तो लिखा नहीं, हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे सिस्टम को, तो एपीआई हो सकता है 2 सेकंड लगा दे डेटा को भेजने में। अब 2 सेकंड प्रोग्रामिंग के अंदर डिले वाइज काफी बड़ा डिले होता है। हो सकता है एपीआई के अंदर कुछ फेलियर हो गया और वो 10 सेकंड बाद डेटा भेज रही है, तो क्या इसके बाद वाला जो काफी सारा कोड है उसे वेट करना चाहिए कि एक बार डेटा आएगा तभी बाकी का कोड रन होगा, जो शायद कोड इस एपीआई डेटा पे डिपेंड भी नहीं करता। तो ऐसे केसेस में सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना अच्छी चीज नहीं होगी। ऐसे केसेस में हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। अब ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहने का क्या मतलब है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी कोड 1 है, लाइन 1 है, यानी इंस्ट्रक्शन 1 है, यहाँ पे कोड 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लेट्स सपोज एपीआई का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड 4 लिखा हुआ है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट कहता है कोड 1 रन कर दो, नॉर्मली रन हो रहा है, कोड 2 रन कर दो, नॉर्मली रन हो रहा है। अगर ये एपीआई वाला कोड या यहाँ पर कोई भी कोड हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती थी, अगर ये इंस्ट्रक्शन ज्यादा टाइम लेती है तो इसको पैरेलली रन होने दो और आप आगे का एग्जीक्यूट करते रहो, और जैसे ही मान लो 5 सेकंड बाद ये रन हो गया फिर इसका आउटपुट दिखा दो। तो इस तरीके से हमें इस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रियल टाइम सिस्टम्स काम करते हैं कि किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए वेट नहीं करना, हमें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल चीज होती है, इट इज कॉल्ड सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हमारे पास एक फंक्शन होता है। सेट टाइम आउट फंक्शन एक्जैक्टली क्या करता है, ये किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स मेक अ फंक्शन कॉल हेलो। हेलो फंक्शन क्या करता है, console.log करता है हेलो, ये मेरा हेलो फंक्शन है। सेट टाइम आउट क्या करता है, किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, पर वो कब एग्जीक्यूट होगा उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे किसको एग्जीक्यूट करना है, मुझे अपने हेलो फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कब करना है, लेट्स सपोज मुझे इसे 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पर सेकंड में टाइम आउट देते हैं। टाइम आउट इज बेसिकली कितने टाइम बाद आप अपना काम करवाना चाहेंगे, तो इस टाइम को हम मिली सेकंड्स में देते हैं। 2 seconds is equal to 2000 milliseconds। तो इस तरीके से 2 सेकंड को हमने यहाँ पर 2000 कर दिया। तो सेट टाइम आउट कहता है कि हेलो फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दूंगा कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद। अब इसका एग्जीक्यूशन एक बार देखते हैं। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे 1 2 सेकंड हमने वेट किया और फिर हमारे लिए हेलो प्रिंट कराया। यहीं पर अगर हम 4 सेकंड कर देते तो जैसे ही रिफ्रेश करते 1 2 3 4 एंड अब 4 सेकंड बाद हमारे लिए हेलो प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली सेट टाइम आउट इतने टाइम बाद हमारे लिए किसी ना किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, काम को करके दे देता है। अब हम चाहे तो अपने फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वी कैन क्रिएट एन एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर ही हम अपना ये हेलो वाला काम कर सकते हैं। तो हमें अलग से इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से भी हमारा सेट टाइम आउट वर्क करता है। रिफ्रेश किया 1 2
3 4 एंड फिर हमारे लिए हेलो प्रिंट करा जाएगा। तो 4 सेकंड बाद वो काम करके दे देगा। अब यहाँ पर ये सेट टाइम आउट है, तो एक तरीके से सेट टाइम आउट क्या करता है, अपना टाइम लेता है। यानी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटेनियसली हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट लिख दिया तो एकदम से आउटपुट हमें दे देगा। वो क्या करेगा, इतना टाइम लेगा आउटपुट देने के लिए। तो अगर सेट टाइम आउट से पहले हम लिख दे console.log1, फिर लिखे console.log2 एंड इसके बाद लिखें console.log3 एंड यहाँ लिख दे console.log4। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये सेट टाइम आउट से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी। पर क्या console.log3 console.log4 ये जो दो स्टेटमेंट है, इवन दो ये इसके आउटपुट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, तो क्या इन्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए 4 सेकंड वेट करने के लिए? क्योंकि जनरली क्या होगा, सिंक्रोनसली चीजें चलेंगी तो क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 4 सेकंड वेट किया जाएगा, उसके बाद ये चीज आके प्रिंट होगी। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर इस तरीके से हम अपना कोड लिखते हैं तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये वेट नहीं करेंगी। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे 1 2 3 4 तो प्रिंट होंगी और एक्जैक्टली 4 सेकंड बाद हमारे पास हेलो भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो क्या किया इन स्टेटमेंट्स ने यहाँ पे सेट टाइम आउट के साथ 4 सेकंड वेट नहीं किया। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम की कि हमने 1 को प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट लिखी, 2 को प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट लिखी, यहाँ हमने सेट टाइम आउट कर दिया, एपीआई की जगह सेट टाइम आउट कर दिया। यानी ऐसा फंक्शन जो टाइम लेता है, और यहाँ पे 3 प्रिंट करवाया, यहाँ पे 4 प्रिंट करवाया। तो प्रोग्रामिंग ने देखा 1 तो मैं प्रिंट कर ही सकता हूँ, 2 भी प्रिंट कर सकता हूँ। अब सेट टाइम आउट है जो टाइम ले रहा है, तो क्या करो, इसे पैरेलली चला दो। यानी साइड में दो, ये जैसे कंप्लीट होगा अपना आउटपुट प्रिंट कर देगा। मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो 3 उसने प्रिंट करवाया, 4 उसने प्रिंट करवाया, जैसे ही सेट टाइम आउट का टाइम कंप्लीट हो गया फिर उसका आउटपुट प्रिंट करवा दिया। यानी सेट टाइम आउट के लिए बैठ के कोड ने वेट नहीं किया कि वेट करते हैं ये कब कंप्लीट होगा फिर हम आगे का काम करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इट इज बेसिकली लाइक इमेजिनिंग कि लेट्स सपोज हमने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया, हम Amazon से कुछ चीज ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करके मंगा रहे हैं। तो एक बार हमने पेमेंट कर दी तो हम वेट नहीं करते कि 24 घंटे में कुछ डिलीवर हो गया, 2 दिन में डिलीवर हो गया, तो हम बैठ के वेट ही कर रहे हैं, हम चेक ही कर रहे हैं कि वो कब आएगा इवन दो हम चेक करते हैं, बट पूरा टाइम हमारा फुल टाइम काम ही वही चेक करेंगे। तो एक बार हमने पेमेंट कर दी तो अब हम अपने नॉर्मल काम करते रहेंगे और जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा फिर हम साइट को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और इस चैप्टर के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसकी एक बार डेफिनेशन भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ड्यू टू सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समटाइम्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू सम प्रीवियस इंस्ट्रक्शन व्हिच कॉजेस अ डिले इन द यूआई। अब यहाँ पे console.log कहता नहीं तो मैं तो सेट टाइम आउट का वेट करूंगा, तो इससे क्या होता है, डिले हो जाती चीजें काफी सारा। यानी ये जो प्रिंटिंग वाला काम है ये नहीं हो पाता। तो इसीलिए एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूशन अलाउज टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली। यानी इसके जो बाद वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये दोनों इंस्ट्रक्शंस वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती हैं एंड डजंट ब्लॉक द फ्लो। एक फ्लो होता है हमारे कोड का कि कोड कैसे काम कर रहा है, उसको ब्लॉक नहीं किया जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चीज इसके बारे में बात करने वाले हैं, दे आर कॉल्ड कॉलबैक्स। और कॉलबैक्स को थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी कि कॉलबैक क्या होता है। कॉलबैक इज बेसिकली एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। जब भी किसी फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन पास करते हैं उसे हम कॉलबैक कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स कॉल इट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ये हमारा फंक्शन है जो हमारे लिए काफी सारे काम कर रहा है। अब इस कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर a एंड b दो नंबर्स हमारे पास आएंगे और हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है कॉल्ड सम। सम क्या करता है, a और b दो नंबर लेता है और उनसे console.log उनका सम प्रिंट करवाता है, a प्लस b। और कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर हमें तीसरा सम फंक्शन इसको हम कह सकते हैं या सम कॉलबैक इसको हम कह सकते हैं। तो जो भी a b आएंगे कैलकुलेटर फंक्शन क्या करेगा, सम कॉलबैक के अंदर a और b इनको पास कर देगा, काम करवा देगा। तो बेसिकली हम कैलकुलेटर को कॉल कर सकते हैं टू कैलकुलेट द सम ऑफ 1 एंड 2 एंड इसके अंदर हम अपने सम फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 3 प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर a और b को हमने पास किया, पर साथ में सम पास किया। सम क्या है, सम एक फंक्शन। है ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास होता है उसे हम कहते हैं कॉलबैक। तो इसीलिए इसके नाम में हमने यहाँ पे कॉलबैक लिख दिया। अगर हम नाम में कॉलबैक नहीं लिखते तो भी वो कॉलबैक ही रहता है। एक और चीज नोट करनी है, जब भी हम कॉलबैक्स को पास करते हैं इसे पैरेंथेसिस के साथ पास नहीं करना, क्योंकि ऐसे अगर पास किया तो ये रन नहीं करेगा कोड। क्योंकि पैरेंथेसिस के साथ पास करने का मतलब है कि सम फंक्शन को हम यहीं कहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे पास एरर आ जाएगा, सम कॉलबैक इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू पास हुई दैट इज नॉट अ फंक्शन। इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया और कुछ चीज प्रिंट करवा दी। तो कॉलबैक्स को जब भी पास करते हैं हमें उन्हें सिर्फ अपने नाम के साथ पास करना पड़ता है विदाउट एनी पैरेंथेसिस। अब हम चाहते तो यहाँ सम की जगह पूरा का पूरा फंक्शन भी पास कर सकते थे। यानी हम चाहते तो यहाँ एक एरो फंक्शन पास कर सकते थे। इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन हो जाता जिसके अंदर a एंड b दो पैरामीटर्स हमारे पास आते एंड यहाँ पर console.log करवाते हम a प्लस b। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस केस में भी क्या होता है, सही आउटपुट आता। यानी कॉलबैक के अंदर हम किसी फंक्शन को ऑलरेडी बनाकर सिर्फ उसका नाम भी पास कर सकते हैं या फिर कंप्लीट वो फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं, वो भी वैलिड सिंटैक्स होगा। ये तो हो गया सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के कॉलबैक। इसके अलावा अभी हमने सेट टाइम आउट का एग्जांपल देखा जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया const hello इज इक्वल टू, इस तरीके से भी एरो फंक्शन की फॉर्म में हम अपने फंक्शन को भी लिख सकते हैं। console.log ये फंक्शन क्या करता है, हेलो प्रिंट करता है। अगर मैंने सेट टाइम आउट को कॉल किया और हम चाहते हैं हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो यहाँ पर ये जो हेलो हम पास कर रहे हैं दिस इज आल्सो कॉलबैक। तो सेट टाइम आउट क्या लेता है, कॉलबैक लेता है। तो इसे सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 2 3 सेकंड बाद हमारे पास हेलो के अंदर आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कॉलबैक सिंक्रोनस एंड सेट टाइम आउट के अंदर एसिंक्रोनस तरीके से भी काम करते हैं। अब कॉलबैक को हमने समझ लिया कि हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया किसी दूसरे फंक्शन को, पर जब भी हम कॉलबैक्स को यूज करते हैं तो रियल टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज कर सकती है, एक काफी बुरी प्रॉब्लम अराइज करती है व्हिच इज कॉल्ड कॉलबैक हेल। तो इसका नाम में हेल है, मतलब ये कोई बुरी चीज है। अब कॉलबैक हेल क्या होता है, कॉलबैक हेल होता है कि कई बार हमारी कोड के अंदर प्रोग्रामिंग करते टाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड कॉलबैक्स आ जाते हैं। अब ये नेस्टेड का क्या मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज के अंदर चौथी चीज, इस तरीके से। अब प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टिंग मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूं। नेस्टिंग जब भी हम कहते हैं, जब भी आप ये शब्द सुनो, चाहे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करें चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करें, नेस्टिंग का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज मैंने कोई इफ एल्स कंडीशन लिखी, मैंने लिखा कोई वेरिएबल बना देते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 19। मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उस केस में कुछ करना है, एल्स कुछ और करना है, console.log चाइल्ड, प्रोबेबली चाइल्ड नहीं बोलेंगे वैसे, उसकी भी कई कंडीशंस होती हैं। इसमें भी इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं console.log सीनियर, एल्स console.log मिडिल।
सो दिस इज अ वैलिड कोड जो रन कर सकता है। अब इस कोड के अंदर मैंने क्या किया, जब हमने अपनी इफ स्टेटमेंट लिखी है, इफ स्टेटमेंट के अंदर भी हम इफ एल्स लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग यानी इफ के अंदर ही इफ एल्स को लिखवाना। तो एक बार ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसके बाद अंदर वाली कंडीशन चेक की जाएगी। तो एज अगर 19 है तो यहाँ पे हमारे लिए मिडिल प्रिंट हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे मिडिल प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज पहले चेक हुई, क्या एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन 18 है। उसके बाद चेक हुआ कि ग्रेटर देन 60 नहीं है, तो यहाँ एल्स में आ गए और ये वाली चीज हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। जैसे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स होता है, वैसे ही हमारे पास नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। जैसे एक हमने लूप बनाया लेट i = 0, i <5, i++, इस तरीके से कुछ, और फिर हमने लूप बनाया लेट i = 0, या दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं j = 0, j <5, j++। और यहाँ पर अगर मैं console.log कर दूं j को, तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 नहीं, 0 1 2 3 4 ये 5 जो नंबर्स हैं, ये हर लाइन 5 लाइनों के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट, बट इसके अंदर सेम लाइन पर लाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रोबेबली क्रिएट अ स्ट्रिंग लेट str = दिस और str = str + j। एंड यहाँ हमें बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है ये कोड जो मैं लिख रही हूँ ये क्या करता है, बस मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। रिफ्रेश किया तो 5 बार क्या प्रिंट हुआ, 0 1 2 3 4। इनफैक्ट यहाँ If you want to become a pro Python developer without having any prior knowledge on the subject, then join our 30-day Python using AI boot. इनफैक्ट यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं i रिफ्रेश। तो फर्स्ट टाइम 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, फिर सेकंड टाइम प्रिंट हुआ, फिर थर्ड टाइम प्रिंट हुआ, फिर फोर्थ टाइम प्रिंट हुआ, फिर फिफ्थ टाइम प्रिंट हुआ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ नेस्टेड लूप। यानी फॉर लूप के अंदर हमने एक दूसरा फॉर लूप लिख दिया। क्यों लिखा, ये कैसे प्रिंट हुआ, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट ये किया जा सकता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो नेस्टिंग का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज को लिखना। अब जैसे इफ के अंदर एक और इफ आ सकता है, फॉर के अंदर एक और फॉर आ सकता है, कॉलबैक्स की भी नेस्टिंग हो सकती है। और यही जो कॉलबैक्स की नेस्टिंग होती है, जब ये बहुत डीपर लेवल पे चली जाती है तो इससे कॉलबैक हेल की प्रॉब्लम हमारे पास राइज होती है। अब ये कॉलबैक हेल की प्रॉब्लम कैसे राइज होती है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी कि जो कॉलबैक हेल है, आगे जाके प्रोमिसेस के टॉपिक को पढ़ेंगे, असिंक का वेट को पढ़ेंगे, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको फर्स्ट टाइम में बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए, क्योंकि काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसीलिए अगर फर्स्ट टाइम में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो उसे घबराना नहीं है। अगर आपको परेशानी आ गई कि एक बार हमने देख लिया पर हमें कंप्लीटली समझ नहीं आया, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। इन टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड देम, और फिर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, अपने खुद के कोड लिखने पड़ेंगे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मतलब क्या था उस चीज को। ठीक है, मैंने सीख तो लिया इसका क्या मतलब है, पर वो प्रॉब्लम कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में राइज करती है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। जरूरी नहीं है आप ये सोच पाओ कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये प्रॉब्लम यहाँ पे करेगी, वो हमें आज समझ नहीं आएगा, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। तो 2 से 3 बार भी अगर आपको टॉपिक को रिपीट करके देखना पड़ता है तो उसमें टेंशन मत लेना, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तभी मैंने पहले बताया था ये चैप्टर अगर आपको कंप्लीट हो गया तो मतलब आप लोगों को जाकर कह सकते हैं अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया कि मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग ठीक से आती है। अब लेट्स सपोज हमने ऐसी वेबसाइट बनाई है जो डेटाबेस से कुछ डेटा लेकर आती है। डेटाबेस हमारा कलेक्शन होता है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। अब ऐसा हम डेटाबेस नहीं पढ़ रहे, पर हम इमेजिन कर सकते हैं एक वेबसाइट है जिसके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स है और उन सारे यूजर्स का डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर है। तो वेबसाइट के अंदर मान लो कोई भी यूजर लॉगिन करता है, तो जब भी यूजर अपना यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करेगा, हमारे कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड को चेक करना पड़ेगा यूजरनेम पासवर्ड सही है क्या। तो हम उस डेटाबेस के साथ मैच करेंगे क्या डेटाबेस के अंदर जो चीज स्टोर है वो इस यूजर ने जो एंटर किया उसके साथ मैच कर लिया तो आप अकाउंट के अंदर एंटर हो जाओगे। तो जब भी हम डेटाबेस से कुछ भी डेटा मंगवाते हैं उसमें हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि कुछ डेटाबेस फास्ट होते हैं, कुछ डेटाबेस के अंदर हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। वैसे प्रैक्टिकल केसेस में जनरली अगर आपका लार्ज डेटाबेस होता है तो उसके अंदर आपको टाइम लगता है डेटाबेस से डेटा फेच करने में। तो ऐसा ही हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, उस डेटाबेस की कॉपी बना लेते हैं एक तरीके से जो हमारे लिए डेटाबेस बनेगा। तो इस फंक्शन को हम कह देते हैं गेट डेटा। ये गेट डेटा फंक्शन क्या करता है, हमें डेटा रिटर्न करता है। दिस इज बेसिकली अ डेटाबेस। और इस फंक्शन को हम बेसिकली एक डेटा का आईडी सेंड करेंगे कि मुझे इस आईडी वाला डेटा चाहिए, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें उस आईडी का डेटा रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली या रिटर्न नहीं करेगा, console.log करवा लेते हैं कि console.log करेगा डेटा विद द डेटा आईडी, इस तरीके की कुछ चीज प्रिंट कराएगा। तो जब हम गेट डेटा को कॉल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक आईडी भेजनी पड़ेगी 1 2 3, तो हमारे पास 1 2 3 आईडी वाला डेटा आ गया। अगर हमने 1 भेजा तो हमारे पास 1 आईडी वाला डेटा आ गया। बहुत मतलब बेसिक लेवल पे, कोर लेवल पे हम इस चीज को लिख रहे हैं। तो हमने कोई आईडी भेजी, उसके बेसिस पे हमारे पास डेटा आ गया। अब लेट्स सपोज ये डेटाबेस कुछ टाइम लेता है, अभी तो इमीडिएटली सेंड कर रहा है, पर ये जो डेटाबेस है ये 2 सेकंड लेता है, डेटा को सर्च करता है, पहले कहां पे है डेटा, फिर 2 सेकंड बाद डेटा को भेजेगा। तो 2 सेकंड बाद डेटा को भेजता है तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट को यूज कर सकते हैं कि लेट्स हैव सेट टाइम आउट इनसाइड दिस फंक्शन। सेट टाइम आउट क्या करेगा, इसके अंदर एक और हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। सेट टाइम आउट डेटा को तो प्रिंट करवा देगा, मतलब भेज देगा, पर कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो इस तरीके से इसी कोड के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर भी आप सेट टाइम आउट इस काम को करेगा पर 2 सेकंड बाद करेगा। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सपोज हमें डेटा चाहिए, हमें 4 5 6 आईडी वाला डेटा चाहिए। तो 1 2 2 सेकंड बाद हमें वो डेटा मिल जाएगा। अगर मुझे 4 आईडी वाला डेटा चाहिए तो 1 2 2 सेकंड बाद हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा डेटाबेस क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है डेटा को रिटर्न करने में। ये नॉर्मल सी चीज है जिसको हमने समझ लिया। अब फॉर एग्जांपल हमें ऐसा कोड लिखना है जिसमें हमें पहले तो डेटा 1 चाहिए, उसके बाद डेटा 1 एक बार हमारे पास आ गया, फिर हमें डेटा 2 चाहिए, फिर डेटा 2 हमारे पास आ गया, उसके बाद हमें डेटा 3 चाहिए। यानी ऐसा नहीं तीनों डेटा साथ में चाहिए, हमें ये डेटा पहले चाहिए, उसके बाद हमें ये डेटा चाहिए, उसके बाद हमें ये डेटा चाहिए। इस चीज को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है कि पहले क्या कर देते हैं, गेट डेटा 1 कर देते हैं, उसके बाद गेट डेटा 2 कर देते हैं, एंड उसके बाद हम गेट डेटा 3 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से हमने कोड लिखा तो क्या होगा, पहले हमारे पास 1 वाला डेटा आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 वाला डेटा आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 वाला डेटा आ जाएगा। तो इसे सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो 1 2 इस सिचुएशन में क्या हुआ, तीनों डेटा हमारे पास एक साथ आ गए। हमें एक साथ डेटा नहीं चाहिए था, हमें तो पहले 1 वाला चाहिए था, फिर हमें 2 सेकंड का डिले चाहिए, फिर ये वाला डेटा चाहिए, फिर हमें 2 सेकंड का डिले चाहिए, फिर हमें ये वाला डेटा चाहिए। पर यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही ये कोड रन किया, इसने क्या किया, गेट डेटा ने क्या किया कि मैं सेट टाइम आउट, मेरा टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 2 सेकंड का और आगे का कोड रन करता हूँ। इसने भी क्या किया, मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 2 सेकंड का और आगे का कोड रन करता हूँ। और इसने भी क्या किया, मैं अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ 2 सेकंड का और आगे का कोड रन करता हूँ। और इन तीनों का टाइमर क्योंकि इमीडिएटली स्टार्ट हुआ था, इमीडिएटली प्रोग्राम चल रही है, तो तीनों का टाइमर एक साथ कंप्लीट हुआ और तीनों का डेटा एक साथ हमारे पास आया। पर ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे पास हो सकती है कि फर्स्ट डेटा आए तभी हम सेकंड डेटा सर्च करें, सेकंड डेटा आए तभी हम थर्ड डेटा सर्च करें। फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूं, प्रैक्टिकल केस। फॉर एग्जांपल हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पहले हम अपना यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, फिर हम अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। अब अज्यूम करते हैं हमारा कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि पहले डेटाबेस के अंदर हमारा यूजर नेम सर्च किया जाएगा। अगर वो यूजर नेम इंस्टाग्राम के ऊपर एग्जिस्ट करता होगा तभी हम पासवर्ड को सर्च करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम को सर्च कर रहे हैं। अगर यूजर नेम मिल गया, हो सकता है उसमें 2 सेकंड लग जाए, 1 सेकंड लग जाए, वैसे तो रियल लाइफ सिनेरियो में काफी मिली सेकंड या और भी बहुत कम टाइम लगता है वो चीज सर्च करने में। बट फॉर आवर सिंपलिसिटी अज्यूम करते हैं उसमें 2 सेकंड लग गए यूजर नेम को सर्च करने में। अब यूजर नेम हो सकता है मिले नहीं डेटाबेस में, तो हम पासवर्ड को क्यों चेक करें, हम यूजर को बताएंगे सीधा आपका यूजर नेम गलत है, इट डजंट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। लेकिन अगर यूजर नेम मिल गया फिर हम पासवर्ड को चेक करेंगे, तो उसमें भी हो सकता है अगले 2 सेकंड लगे। तो इस तरीके की कंडीशन हम यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, जिसमें हमें डेटा जो सर्च करनी है चीज वो एक साथ नहीं चाहिए, हमें तो इंडिविजुअल डिले के साथ चीजें चाहिए। तो उसको करने का क्या तरीका होगा, उसको करने का एक प्रैक्टिकल तरीका होता है कॉलबैक्स। कॉलबैक से हम कैसी चीज को कर सकते हैं,
हमारे पास ये जो गेट डेटा वाला फंक्शन है, इसे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन इसके पास कर सकते हैं, एक और कॉलबैक इस गेट डेटा को पास कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं गेट नेक्स्ट डेटा। गेट नेक्स्ट डेटा क्या करेगा, एक बार ये डेटा हमने प्रिंट करवा लिया, उसके बाद अगर इसके बाद भी कोई और डेटा चाहिए होगा तो उसको गेट करेगा। तो गेट नेक्स्ट डेटा एक फंक्शन पास कर देंगे और एक बार हमें ये प्रिंट करवा लिया, फिर हम गेट नेक्स्ट डेटा को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जब हम गेट डेटा को पास करें तो गेट डेटा में 1 तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा हो जाएगा, और गेट नेक्स्ट डेटा में दोबारा हम गेट डेटा को पास करेंगे, और इसको किसके साथ पास करेंगे, इसको पास करेंगे विद एन आई। डी ऑफ 2। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गेट डेटा को तो कॉल कर रहे हैं और हमें ये वाला डेटा चाहिए, कंप्लीटली क्लियर है, और हम चाहते हैं जैसे ही हमें ये वाला डेटा मिल जाए उसके बाद नेक्स्ट डेटा भी चाहिए हमें। अब नेक्स्ट डेटा कहाँ से आए, नेक्स्ट डेटा के लिए हमने उसी फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास कर दिया। अब इस तरीके से हम कॉल बैक पास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लग गया, तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ऐसे कोड लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा इस तरीके से कि गेट नेक्स्ट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। क्यों क्यों एरर आया, क्योंकि ये तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया और ये पहले एग्जीक्यूट हो गया इनफैक्ट, इसलिए 2 वाली चीज पहले प्रिंट हो गई। तो ऐसे नहीं लिखना अपने कॉल बैक को। जब भी हमें साथ में कुछ आर्गुमेंट पास करना है तो अपने कॉल बैक को ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। ये जो एरो फंक्शन भाई यार आएगा इस तरीके से कि गेट नेक्स्ट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। क्यों क्यों एरर आया, क्योंकि ये तो
इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया और ये पहले एग्जीक्यूट हो गया इनफैक्ट, इसलिए टू वाली चीज पहले प्रिंट हो गई। तो ऐसे नहीं लिखना अपने कॉल बैक को। जब भी हमें साथ में कुछ आर्गुमेंट पास करना है तो अपने कॉल बैक को ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। ये जो एरो फंक्शन है ये एक प्रॉपर फंक्शन है जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉल बैक। इस तरीके का कोड देखने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट जनरली आप रियल लाइफ कोड देखोगे कंपनीज के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, तो इसी तरीके से कोड लिखा होता है। तो जो अजीब सा दिखने वाला, कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सिंटैक्स है, दिस इज रियल लाइफ प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से हम अपने कॉल बैक को पास करेंगे। अब इसको सेव कर लेते हैं। एंड एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि गेट डेटा के अंदर फर्स्ट टाइम तो हमने कोई कॉल बैक पास कर दिया, पर ये जो सेकंड टाइम हम गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं इसमें तो गेट नेक्स्ट डेटा है ही नहीं। तो यहाँ हम एक चेक लगा सकते हैं कि अगर गेट नेक्स्ट डेटा ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तभी इस फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो 1 2 2 सेकंड बाद डेटा बनाएगा, दोबारा से 2 सेकंड का डिले होगा, फिर हमारे पास डेटा 2 आएगा। यानी जो काम हम करना चाह रहे थे उसको हमने अचीव कर दिया। कैसे अचीव किया, रिफ्रेश करेंगे तो 1 2 2 सेकंड बाद डेटा बनाएगा, दोबारा से 2 सेकंड का डिले होगा, फिर हमारे पास डेटा 2 आएगा। यानी जो काम हम करना चाह रहे थे उसको हमने अचीव कर दिया। कैसे अचीव किया, कॉल बैक की फॉर्म में, कि हमने यहाँ पे एक कॉल बैक पास कर दिया। ये एज अ बिगिनर आप सोचो कि अभी तक मैंने इतनी सारी जावास्क्रिप्ट के चैप्टर पढ़े थे, ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि मैं इस तरीके से पास करूं, नहीं आएगी। इस तरीके से कोड लिखना हर किसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखना पड़ता है। हमें जानना पड़ता है कि कोड को ऐसे भी लिख सकते हैं। एकदम से फॉर अ बिगिनर आपको हिट नहीं करेगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि इतना लिखना हर किसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखना पड़ता है। इतनी सारी करना चाह रहे थे उसको हमने अचीव कर दिया। कैसे